A very happy morning, dear children. Welcome, welcome, welcome after a long time. हमने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, right dear children? So welcome to the very first class of our semester 2. And today we will start with poem 11, The Letter by Margaret G. Rhodes. Okay dear children, today we will understand the poem and it is a very simple poem. Okay dear children, so pay attention. First we will see the central idea of the poem. The poet tells the readers how to write a letter. यहाँ पे पोएट हमें क्लियरली बता रही हैं कि हमें लेटर कैसे लिखना होता है. It is a nice poem where the poet describes the proper way of writing a letter in an appropriate format. Dear children, there is a fixed format of how you should write the letter. So in this poem, Margaret is telling us an appropriate format of writing the letter. Okay? Now we will see each stanza and we will understand it. Okay? You have to recite it with me. Read it, recite it. Okay? Stanza 1. I am writing a letter to send by the post. The poet is writing a letter that will be sent by post. It is to the person I care for the most. पोएट जिनके लिए बहुत केयर करती हैं, ये पोएम उनके लिए है, ये लेटर उनके लिए लिखा जा रहा है. मीनिंग ऑफ पोस्ट, द ऑफिशियल सिस्टम यूज्ड फॉर सेंडिंग लेटर. लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो मोड होता है उसे हम पोस्ट बोलते हैं. ओके. स्टांजा नंबर 2. I write the date clearly. In each letter, date must be written very clearly. And put the address and begin, dearest mummy. उन्होंने डेट और एड्रेस लिखा अच्छे से एंड देन उन्होंने अपना लेटर स्टार्ट किया बाय राइटिंग डियरेस्ट मम्मी. डिड एनीवन गेस? किसी ने गेस किया कि वो अपने मम्मा को लेटर लिख रहे थे? नेक्स्ट स्टैंजा. Okay, we will see the meaning of guess. Guess means to try and give an answer. हम कभी कभी सोचते हैं ना इसका आंसर क्या होगा? Means we are guessing the answer. Okay? Then, stanza number 3. My pen travels slowly all down the sheet. This means that the poet is writing the लेटर वेरी स्लोली ताकि वो ध्यान से लिख पाए. ओके. द पेन इज ट्रैवलिंग मीन्स द पोएट इज राइटिंग द लेटर वेरी स्लोली बिकॉज आई एम सो एंशियस टू कीप इट ऑल नीट. द पोएट इज राइटिंग द लेटर वेरी स्लोली ताकि उनसे कोई मिस्टेक नहीं हो एंड लेटर बहुत ही ज्यादा नीट हो. Let's see the meaning of anxious. Worried or nervous. चिंता करना कि सब हो जाएगा. Okay, so the poet is worried कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए. That's why she is writing the letter very slowly. Stanza number 4. I carefully blot it. Blot means to tap a thing with the other thing. Okay. To dry up the ink. Ink को dry करने के लिए the poet is blotting the letter. Such nice blotting paper. The color is pink. Blotting paper is a special type of paper जिसे हम दूसरे letters को या फिर दूसरे papers के ऊपर उसे रख के उस letter के ink को dry करते हैं. Okay, let us see the meaning of blot and blotting paper. To remove
liquid from a surface by pressing soft paper or cloth on it. किसी वेट एरिया को या किसी लिक्विड को अगर हम टैप कर रहे हैं दूसरे पेपर से या एक क्लॉथ से, so that is known as blot, and the substance used to blot it is known as a blotting paper. You can see the meaning here very clearly. Soft, thick paper used for drying ink after one has written something on a piece of paper. Okay, dear children? So, the color of the blotting paper is pink. Stanza number 5. I turn the page over and on goes my pen. उन्होंने एक पेपर पे जो लिखना था लिख दिया. Now the poet has turned the paper to write more things. Till lastly come kisses, there's just room for 10. वो लेटर में अपने मम्मा को बहुत सारी किसेस भेज रहे हैं, मतलब बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं. एंड लेटर में जो प्यार भेजा जा रहा है किसेस के फॉर्म में, द रूम इज फॉर 10 मीन्स वो अपनी मम्मा को 10 kisses भेज रहे हैं with lots of love in the letter. Okay. Stanza number 6. The envelope is ready. The poet has completed the letter and उन्होंने लेटर को envelope में डाल दिया है. I put the stamp on. Dear children, stamp are the small pictures which are always used on the envelope of the letter ताकि हम उसे post कर पाएं. Okay? And ran to the post box, and the poet is running towards the post box to post the letter, and now it has gone. Now the letter is gone to her mother. Let's see the meaning of envelope and stamp. Envelope, a flat paper container used for sending letters. एक पेपर से बना हुआ कंटेनर होता है जिसमें हम लेटर्स डालते हैं. ओके. स्टैम्प, a small piece of paper with a design on it that we stick on an envelope before we post it. एनवेलप को कहीं भी पोस्ट करने से पहले एक छोटा पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे डिजाइन्स होते हैं, एंड उसे स्टिक करने के बाद ही यू आर अलाउड to post the letter. Dear children, here we are done with the poem. Now let's see what we have to share. Share it. Write a letter to your parents expressing your love for them. आपको एक सिंपल सा लेटर लिखना है in 5 to 6 lines where you will express your love for your parents, and after writing it, you have to send me a photo shot of the letter written. Okay, dear children, I will see you next time with the part 2 of this poem. Till then, go through the poem, write the letter. Bye, dear children. God bless you.